Hello friends, welcome back to series of lecture. This is the 18th lecture of this series of Indian Constitution. Now please write down the points. First case is Indra versus Union of India 1992 Supreme Court. Indra versus Union of India 1992 Supreme Court. Write down the points of this case. Write down first point. The concept of reservations. The concept of reservations is certainly anti-meritarian. Anti-meritarian means against merits, as one has to be allowed to enter into a job or occupy a job without having sufficient merits, as he belongs to the reserved category. However, for the ends of social justice, that much of a compromise has to be made. Actually, कोर्ट ने ये होल्ड किया कि इफ यू आर डूइंग रिजर्वेशंस, क्वेश्चन ये था कोर्ट के सामने कि रिजर्वेशन करके यू आर गेटिंग इनटू द जॉब लेस मेरिटोरियन पीपल, एंड इफ इट इज लेस मेरिटोरियस then that much compromise of efficiency to the administration is done, and if that much compromise is done with the efficiency by the administration, then in that case is it not something which is unwelcome. वहां पर कोर्ट ने कहा जो सोशल इनजस्टिस हुए हैं इतने सालों में उनको दूर करना है, अगर सोशल जस्टिस करना है तो कुछ तो कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा अपॉन द एफिशिएंसी ऑफ मेरिट्स. अब कितना कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा दैट हैज टू बी सीन इन द मैटर ऑफ द फैक्ट्स ऑफ द केस, बट some compromise has to be done because social justice and compromise on merits, both of them in this circumstance will oppose each other. क्योंकि आप कम मेरिट पर सेलेक्ट नहीं करोगे तो रिजर्वेशन का फायदा क्या, और अगर कम मेरिट पर सेलेक्ट करते हो तो ऑब्वियसली efficiency of the administration will some compromise has to be done. So in that way the court held कि उतना आपको कॉस्ट पे करना पड़ेगा फॉर द पर्पसेस ऑफ सोशल जस्टिस. नेक्स्ट पॉइंट, आर्टिकल्स 15 clause 4 and 16 clause 4 are not exceptions of article 14, 15 clause 1 or 16 clause 1. Rather, they are mere extensions of these provisions. The special provisions under 15 clause 3, 15 clause 4 or 16 clause 4 are for the ends of purpose of social justice, and they are otherwise also implicit in article 14 itself. आपको ये पहले बता चुका हूँ कि अगर 15-16 नहीं होता तो we all that done in 14 itself, and whatever the areas which are not covered in 15 and 16 that is still done in 14. Now next point, the extent of reservation. The court held that the fair balance have to be done between the needs of the backward classes and the other classes, and there cannot be a case of proportionate representation. Rather, it has to be adequate representation. Therefore, 50% of reservation would be sufficient. ये पॉइंट इंदिरा साहनी में कहा गया था. Now write down the next paragraph in this point. However, it has been held by the Supreme Court in M. Nagraj versus Union of India 2006 Supreme Court. However, it has been held by the Supreme Court in M. Nagraj case that reservation may go beyond 50% also depending upon the needs of backward classes in that particular state. Needs of backward classes in that particular state, मतलब level of backwardness देखना होगा. So here in M. Nagraj case they are talking about reservation can go beyond 50% also. State Tamil Nadu में at a time it was more than 50% reservation was given. That is one example of that. So depending upon the needs of the backward classes in that state, reservation can be more than 50% and that could not be unconstitutional. अब आप 50 की जगह 55% रिजर्वेशन दे दो, पर ये देखा जाएगा किस जॉब में दे रहे हो.
उस जॉब में बैकवर्ड क्लासेस का रिप्रेजेंटेशन कितना है वो देखा जाएगा। इनएडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन है तो कितना इनएडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन है। ऑल दैट टू बी एग्जामिन्ड and then only the court will decide as to whether that particular reservation is constitutional or not. So सारे पैरामीटर्स को एग्जामिन करने के बाद कोर्ट डिसाइड करेगा कि रिजर्वेशन कॉन्स्टिट्यूशनल है या नहीं। बट इन प्रिंसिपल्स यू कैन go beyond 50% for reservations as per needs. Next point, criteria for classification for the purpose of reservation has to be cast together with some economic criteria. From the backward classes, the creamy layer should be excluded from reservation. अब creamy layer क्या है? That you will find in Gian Pandey etc. in details, but creamy layer is more affluent classes groups in the backward classes. Suppose there is a caste, particular caste is a backward caste class. अब उनमें जो लोग हैं जिनमें पर्टिकुलर लेवल ऑफ इनकम या पर्टिकुलर प्रॉपर्टी जिनके पास है तो दे विल नॉट कंसीडर टू बी फिट फॉर रिजर्वेशन, दे विल बी एक्सक्लूडेड. सपोज ए पर्सन इज बिलोंगिंग टू द बैकवर्ड क्लास एंड हिज फादर इज डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और IAS ऑफिसर, सो दिस पर्सन विल नॉट गेट रिजर्वेशंस. बट द पॉइंट इज ये जो क्रीमी लेयर है OBC सिर्फ OBC में लगाया है, SC ST में ये कॉन्सेप्ट नहीं लगा. अब किसी ST या जैसे मीणा कम्युनिटी है उसमें कितने भी IAS ऑफिसर एक फैमिली में हो फिर भी वो रिजर्वेशन लोगे क्योंकि उधर क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट नहीं लगा है. सिमिलरली फॉर SCs, सो राइट डाउन दिस, द कॉन्सेप्ट ऑफ क्रीमी लेयर applies only upon the OBCs other backward classes and not upon the SCs and STs scheduled caste and scheduled tribes, scheduled castes and scheduled tribes. Then next लिखिएगा एक क्वेश्चन था कोर्ट के पास, is article 16 clause 4 is article 16 clause 4 exhaustive about the very concept of reservations. मीन्स रिजर्वेशन आप 16(4) बाहर भी दे सकते हो या नहीं, या सिर्फ 16(4) में ही दोगे. अब गवर्नमेंट जॉब में तो सिर्फ 16(4) में ही मिल सकता है क्योंकि उसके लिए इट इज़ एग्जॉस्टिव, क्योंकि 16(4) में ऑलरेडी रिजर्वेशन है तो किसी और में क्यों देंगे गवर्नमेंट जॉब्स के लिए. लेकिन हाँ अगर रिजर्वेशन का जो कॉन्सेप्ट है उसके लिए 16(4) इज़ नॉट एग्जॉस्टिव, क्योंकि रिजर्वेशन आप आर्टिकल 15 में भी देते हो स्कूल्स कॉलेज के एडमिशन्स में, उसके अलावा आप रिजर्वेशन आर्टिकल 14 में भी डायरेक्टली दे सकते हो. सो रिजर्वेशन के कॉन्सेप्ट के लिए दिस आर्टिकल इज नॉट एग्जॉस्टिव, बट यस इफ इट टॉक्स अबाउट गवर्नमेंट जॉब्स, reservation in government jobs, then it is exhaustive. Write down, with respect to reservations in government jobs, Article 16 Clause 4 is exhaustive, but it is not exhaustive as such regarding the very concept of reservations, as reservations can be granted for admissions to schools and colleges and several other purposes outside the Article 16 Clause 4 also. Now the last point, write down a term, vertical or horizontal classification. Vertical and horizontal classification. Let's take an example. Suppose ये 100% सीट्स हैं किसी भी एग्ज़ाम के लिए जो वैकेंसी निकली हैं या सीट्स हैं, दीज आर 100% सीट्स यहाँ से लेकर यहाँ तक, इट इज़ 50% यहाँ से यहाँ तक, और फ्रॉम हेयर टू हेयर इट इज़ 100%. टोटल 100% सीट्स जो भी निकली हैं वॉट एवर द सीट्स, तो उसमें से हमने 3 पार्ट्स में इसको डिवाइड कर दिया. SCs इधर से इधर तक जो इनका कोटा होगा, STs इधर से इधर तक देयर कोटा, एंड OBC कोटा. दिस इज 50% कोटा दे रखा है ना, so rest 50% is of general. So we have divided the 50% seats of reservation category into 3 categories, SCs, STs and OBCs. So this is what called the vertical classification
of the reserved seats, and we have classified that into three categories. This vertical classification is in three categories. 50% रिजर्वेशन मिलेगा आउट ऑफ 100% सीट्स में से। किस किस को मिलेगा? ओबीसी को मिलेगा, एससी को मिलेगा, एसटी को मिलेगा। लेकिन उसके भी अंदर जो ओबीसी क्लास है उसके भी अंदर लेस बैकवर्ड और मोर बैकवर्ड क्लासिफिकेशन किया गया है। मीन्स ओबीसी एक क्लासिफिकेशन में आप फर्दर क्लासिफिकेशन कर सकते हो या नहीं, सब क्लासिफिकेशन, दैट इज मोर बैकवर्ड ओबीसीज एंड लेस बैकवर्ड ओबीसीज, सो यू कैन डू दैट। सो एक ग्रुप को यदि आप फर्दर सब क्लासिफाई करो, दैट इज व्हाट कॉल्ड हॉरिजॉन्टल क्लासिफिकेशन, मीन्स आइडेंटिफाइंग थ्री ग्रुप्स ओबीसीज, एससीज एंड एसटीज, that is vertically dividing the reserve category into three categories. So that is called the vertical classification. But within one category, reserved category, within one reserved category, if you go for further sub classifying in smaller groups, that is what called horizontal classification. The question before the court was क्या फर्दर हॉरिजॉन्टल क्लासिफिकेशन हो सकता है, एंड द आंसर वाज यस। कैन देयर बी ए फर्दर हॉरिजॉन्टल क्लासिफिकेशन? द आंसर वाज यस। एक ग्रुप को आप फर्दर सब ग्रुप में डिवाइड कर सकते हो। वन ग्रुप कैन बी डिवाइडेड इनटू फर्दर सब ग्रुप्स। अब एससीज और एसटी के लिए द इशू वाज नॉट रेज्ड। एससीज और एसटीज को हमने अभी तक सब ग्रुप्स में नहीं बांटा है। We can say more backward SCs and less backward SCs, but in OBCs we are going in that direction. जो less backward हैं उनको हम 10% देंगे OBCs में, और जो more backward हैं उनको 17.5% देंगे. So several states are following this criteria. Horizontal classification means dividing a subgroup into several smaller groups. So write down the division of the reserved category into OBCs, SCs and STs will be called vertical classification. But dividing a reserved category further into smaller subgroups will be called horizontal classification. That is constitutionally permissible. And that is constitutionally permissible. Now write down the another case, M. Nagraj versus यूनियन ऑफ इंडिया 2006 सुप्रीम कोर्ट। अब इसके पॉइंट्स भी लिख लो आप। मोस्ट ऑफ द पॉइंट्स वी हैव डिस्कस्ड ऑलरेडी। राइट डाउन द फंडामेंटल राइट्स एज वेल एज द डीपीएसपी बोथ एम एट डूइंग सोशल जस्टिस। अब ऐसा नहीं है फंडामेंटल राइट आपको सिर्फ राइट्स दे रहा है। फंडामेंटल राइट्स में बहुत सारे आर्टिकल्स ऐसे हैं, जैसे 15 क्लॉज 2 है। व्हाट 15 क्लॉज 2 सेज कि अगर आपका प्राइवेट ओन्ड प्लेस भी है तो यू शुड हैव टू ओपन फॉर ऑल पब्लिक विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। व्हाट इज दैट? दैट इज एम्ड एट सोशल जस्टिस। तो ऐसा नहीं है फंडामेंटल राइट्स खाली फंडामेंटल राइट्स ही देता आपको, इट ऑल्सो एम्स एट सोशल जस्टिस। सिमिलरली आर्टिकल 17 वगैरह देखोगे आप, आर्टिकल 21-14 में सोशल जस्टिस इज इम्प्लिसिट। सो फंडामेंटल राइट्स में आप देखोगे द सोशल जस्टिस इज द गोल, एंड डीपीएसपी में ऑब्वियसली द सोशल जस्टिस इज द गोल। So DPSP में social justice is always the goal. So the court is saying कि सिर्फ DPSP नहीं, but the fundamental rights also aim at doing social justice. It is, write down, it is the constitutional duty of the state to take measures for the purpose of promoting social justice. For the purpose of promoting social justice. Next point. Article 16, 1 and 2, clause 1 and 2 are individual specific and they prohibit discrimination by the state and also mandate for equal opportunity to all. But the prohibitory language of 16 Clause 2 cannot prevent the state. Article 16 Clause 2 cannot prevent the state from taking positive action in order to promote social justice.
अब ये तो आप पहले भी पढ़ चुके हो, 14 में भी इम्प्लिसिट है, और हम देख चुके हैं कि इक्वल अपॉर्चुनिटी की बात करता है 16(1) में। उसमें भी unless you bring the lesser classes at par, how can the absolute social justice can be done, and how can the actual equal opportunity given to them? How can the actual social justice be done, and how can the actual equal opportunity be given to them unless you bring the lesser classes at par? Now the next point. अब ये मैंने 16 क्लॉज 1 2 एक साथ लिख दिया, but you have to write it separately. Similarly here also 16(4) clause 4a and 16(4)b. Write down Article 16 clause 4 on the other hand is group specific. That is, it takes care of doing justice with the backward classes by identifying them and giving them reservations in government jobs. The purpose of Article 16 clause 4 and 16 clause 4a and 4b is promotion of social justice. 16 clause 4a and 4b cannot be declared unconstitutional on the face of it, as these provisions essentially aim at promoting social justice. Giving reservations in promotion or filling up of the backlog. Giving reservations in promotion or filling up of the backlog vacancies in itself cannot be declared to be unconstitutional. Rather, it is the state which has to make law for the purpose of Article 16, 4a and 4b. And every such specific law can be examined individually to see whether in that particular job reservations in promotions or the carry forward principle required or not. मतलब ये जो आर्टिकल में अमेंडमेंट किया है उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये पहले भी बता चुका हूं मैं आपको। हो सकता है किसी एक पर्टिकुलर जॉब में रिजर्वेशन इन प्रमोशन जरूरी हो, क्योंकि एससीज और एसटीज का जो हायर रैंक्स हैं उसमें कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं है। मे बी इन प्रमोशन यू कैन गिव द रिजर्वेशन, consider them to be more backward, and therefore you are giving a special privilege to them. OBCs are not considered to be as backward as SCs and STs, and therefore OBCs को इसमें नहीं डाला, so they had not got the reservation in promotion. Similarly, एक पर्टिकुलर जॉब में कितने सीट्स बैकलॉग हैं और उतने सीट्स आप प्रैक्टिकली भर सकते हैं या नहीं। आपने कहीं करंट ईयर का सीट तो नहीं कम कर दिया। All those things to be examined, and then that particular law has to be seen whether that is constitutional or not. But as a policy in 16(4)A and 16(4)B, the policy is not unconstitutional. That is what the court says. अब हर जो एक्शन होगा स्टेट का इंडिविजुअल, उसको हम चैलेंज होगा तो उसको एग्जामिन करेंगे, लेकिन सोशल जस्टिस के लिए अगर जरूरी है कि आप प्रमोशंस में रिजर्वेशन दो, देन दैट शैल नॉट बी अनकॉन्स्टिट्यूशनल। सिमिलरली अगर सोशल जस्टिस के लिए जरूरी है कि आप बैकलॉग वैकेंसीज को फिल करो, दैट कैन ऑल्सो बी डन, बट हाउ मच बैकलॉग वैकेंसीज एंड हाउ मच न्यू सीट्स, all that facts and etc. in the case of a specific law has to be examined. Now the next point. Public employment is a scarce commodity. Scarce मतलब क्या? Less available. Public employment is a scarce commodity. A scarce commodity in economic terms, and therefore its distribution has to be done in very cautious manner. A fair balance has to be made between 16 clause 1 on the one hand and 16 clause 4, 16
clause 4A and 4B on the other hand, and 16 clause 4, 16 4A and 4B on the other hand. मीन्स जो जनरल मैंडेट है कि आप इक्वल ट्रीटमेंट करोगे सबका, उस मैंडेट को, और दूसरा रिजर्वेशन दे सकते हो, प्रमोशन में भी दे सकते हो, कैरी फॉरवर्ड भी लगा सकते हो, ये वाले जो हैं इन दोनों में प्रॉपर बैलेंस होना चाहिए। तो आप कितना रिजर्वेशन दोगे, किस पोस्ट के लिए दोगे, ऑल दैट हैज टू बी वेरी प्रॉपरली कैलकुलेटेड। मीन्स बैलेंस between broadly what? Balance between the rights of the general category and of the reserved category. There has to be a fair balance between the two rights. Means एक unreserved category students उनके अधिकार और एक reserved category के students उनके अधिकार. There has to be a fair balance between them. Now the last point. In the process of reservation, creamy layer has to be excluded from the OBCs. The exclusion of creamy layer is broadly in the spirit of secularism. Secularism here is for fraternity. अब सपोज बैकवर्ड क्लासेस में भी जो कुछ कम बैकवर्ड होंगी, कुछ ज़्यादा बैकवर्ड होंगी, तो जो कम बैकवर्ड हैं क्लासेस हैं बैकवर्ड क्लासेस में, तो सारा बेनिफिट अगर वो ले जाएं, सो ये बेनिफिट रियल बैकवर्ड लोगों को नहीं मिलेगा, एंड देयरफॉर दैट एपैथी विल बी क्रिएटेड. सो बाय रिमूविंग द क्रीमी लेयर वी हैव अलाउड द जस्टिस, द वेलफेयर ऑफ द रिजर्वेशंस टू द पीपल हु एक्चुअली नीड इट. उसमें भी आई टोल्ड यू दैट उसके बाद भी इनजस्टिसेस तो हो ही रहे हैं. जो ज़्यादा बैकवर्ड हैं उनको नहीं मिल रहा है, खास करके एससीज और एसटीज में जो ज़्यादा बैकवर्ड है दे आर नॉट गेटिंग, बिकॉज उसमें क्रीमी लेयर तो नहीं लग रहा, तो जो ज़्यादा डेवलप्ड है वो ले जा रहे हैं. ओबीसीज में जो ज़्यादा बैकवर्ड है उनको मिलेगा, बिकॉज इन ओबीसी क्रीमी लेयर कॉन्सेप्ट इज एप्लीकेबल. नाउ लेट्स सी द अनदर केस. अशोका कुमार ठाकुर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2008 सुप्रीम कोर्ट. जजमेंट डिलीवर्ड बाय के.जी. बालाकृष्णन, चीफ जस्टिस. अब पहला पॉइंट तो इसमें था कि 15 क्लॉज 5 कॉन्स्टिट्यूशनल है कि नहीं, ये हमने पहले डिस्कस किया था. प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस पर आपने रिजर्वेशन का बर्डन लगा दिया. सो कैन द बर्डन बी शिफ्ट अपॉन द प्राइवेट इंस्टीट्यूशन फॉर द अपलिफ्टमेंट एंड डू द सोशल जस्टिस. सो द पॉइंट वाज दैट द गवर्नमेंट इज नॉट शिफ्टिंग, द गवर्नमेंट इज जस्ट एक्सपेंडिंग. The government is saying that we are doing it, but alone we cannot do it. So the private individuals also who are earning profit from the society, they should also be at the burden and they should also provide reservations. So to that extent, it is held to be constitutional. 19(1)(g gives you the right to trade, business, etc. अगर आपके पास बिजनेस का राइट 19(1)(g में है, तो गवर्नमेंट के पास 19(6) में पावर है कि आपके उस राइट को कर्टेल कर सके. और ये जो पॉलिसी लगाया है, दैट इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ दैट पावर ऑफ स्टेट ओनली. राइट डाउन. आर्टिकल 15 क्लॉज 5 इज नॉट अनकॉन्स्टिट्यूशनल merely because it imposes burden of reservations upon private institutions. It is not possible for the state alone to bring about social justice without the participation of private institutions. The private institutions also are earning profits from the society, and therefore they too have a constitutional duty to share the burden of social justice and upliftment. Under Article 19, Clause 6, state has the power to put restrictions upon the right to trade, business, etc. under Article 19(1)(g, Article 15, Clause 5 is a manifestation of such a restriction. Now next point, another question before the court is as to whether creamy layer
creamy layer would apply with respect to Article 15 Clause 5. Another question before the court is as to whether creamy layer would apply with respect to Article 15 Clause 5 also, as earlier judgment of the Supreme Court have been on Article 15 Clause 4 and 16 Clause 4, and therefore they will not be binding with respect to Article 15 Clause 5. अब बेसिकली इसमें पॉइंट क्या था, ये जो हम रिजर्वेशन बैकवर्ड क्लासेस को प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में दे रहे हैं थ्रू 15 क्लॉज 5, वहाँ भी क्रीमी लेयर लगेगा कि नहीं। टेक्निकल प्रॉब्लम इसमें ये था कि नागराज जजमेंट, इंदिरा साहनी जजमेंट, एनी अदर जजमेंट, दे ऑल वर रिलेटेड टू 16.4 and 15.4. 15.5 was not in the article then, so those judgments will be binding as judicial precedents only with respect to reservations under 15.4 and 16.4. But 15.5 now is a new provision added. So will the judgment of Indra Sahni or Nagraj be binding upon reservation with respect to 15.5? Answer is no, because this was not a fact in those cases. And therefore टेक्निकल हर्डल ये था क्योंकि इंस्टीट्यूशंस में एडमिशन के टाइम पे अथॉरिटीज़ को ये पता ही नहीं था अभी कि हम रिजर्वेशन तो दें, लेकिन रिजर्वेशंस में हम क्रीमी लेयर को एक्सक्लूड करें कि नहीं। इस वजह से एडमिशन्स रोक दिए गए थे उस टाइम, एंड देयर वाज ए डिमांड दैट क्रीमी लेयर्स शैल बी एक्सक्लूडेड, बट अंडर व्हाट लॉ? आर्टिकल 15 clause 5 is silent upon that, and Indra Sahni judgment and etc. are silent upon, not applicable upon 15.5. Indra Sahni and Nagraj judgment and other judgments are not applicable upon 15.5, and therefore the Supreme Court gave answer to this question also, and the Supreme Court clearly held कि ये जो जजमेंट्स हैं इंदिरा साहनी वगैरह में जो 15.4 और 16.4 पर हैं, वो 15.5 पर बाइंडिंग प्रेसिडेंट की तरह लागू नहीं होगा, बिकॉज 15.5 वाज नॉट इन एग्जिस्टेंस एट दैट टाइम, बट ब्रॉडली द स्पिरिट ऑफ 15.5 एंड अदर आर्टिकल्स आर द सेम। सो जब स्पिरिट सेम है तो सेक्युलर कॉन्सेप्ट ऑफ क्रीमी लेयर शुड बी एप्लीकेबल विद रेस्पेक्ट टू 15.5 also. So write down the answer of this. Regarding exclusion of creamy layer from 15 clause 5, the court held that no doubts Article 16 clause 4 and 15 clause 4 are subject to the exclusion of creamy layer as held in Indra Sahani judgment. Article 15 clause 5 will not be hit by Indra Sahani judgment technically, as this clause was not in existence at that time. However, the spirit of all these clauses is same, that is social justice, and therefore the secular principle of exclusion of creamy layer shall be applicable even upon 15 clause 5. Then next question arose. Another question before the court was, is not the concept of reservation is anti-secular, and as to when will the requirement of reservation ends? Answer for that given by the court is, the court held that the concept of reservation is for social justice and it cannot be anti-secular, as it aims at bringing the backward classes into the mainstream, and that will ultimately promote fraternity in the society. Next paragraph. The court also held, however, that excessive and prolonged reservation will result into development of apathy within the society, and therefore the sooner the concept of reservation is removed, the better it will be. However, the court held that the requirement of reservation will not end until the phenomena of one group
one group of person looking down upon another group of persons stops. मतलब जब तक एक ग्रुप दूसरे ग्रुप को नीचा देखना बंद नहीं करेगा तब तक रिजर्वेशन का कॉन्सेप्ट खत्म नहीं होगा. एंड फॉर दैट पर्पज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टूल इज एजुकेशन. नेक्स्ट पैराग्राफ. Education is the most fundamental of all the fundamental rights, and the state shall in particular focus upon promoting value education, so that the apathy due to class and caste divide is removed. The court also held even the private individual should come forward and participate in spreading education. The court suggested that the carrot and stick policy should be followed. अब कैरेट पॉलिसी क्या होगा कि थोड़ा सा इंसेंटिव दो, थोड़ा सा लालच दो, जैसे खरगोश को गाजर दिखाएंगे तो वो दौड़ा हुआ आता है. उसी प्रकार से जो स्कूलों में वजीफा मिलता है तो या फिर मिड डे मील एक्सेट्रा, तो दैट इज कैरेट पॉलिसी. तो थोड़ा सा लालच दो स्टूडेंट्स टू द स्टूडेंट्स एंड द पेरेंट्स, सो दैट द स्टूडेंट्स कम टू द स्कूल एंड द पेरेंट्स सेंड देम टू द स्कूल. एंड स्टिक पॉलिसी मीन्स मारना, डर दिखाना कि जरूरत पड़ी तो हम आपको पेनलाइज भी कर सकते हैं. सो दैट काइंड ऑफ अ डुअल पॉलिसी. उसके लिए आपको गार्डियन को इन्वॉल्व करो. जैसे कोई स्कीम निकाल दी कि किसी बच्चे की 100% अटेंडेंस है स्कूल में, तो लेट द चाइल्ड हैव द स्पेशल बेनिफिट्स, लेट द गार्जियन हैव द स्पेशल बेनिफिट्स. इट मे बी सम काइंड ऑफ कैश रिवॉर्ड or whatever, or a scholarship to be provided him for good coaching or colleges. And similarly, if the parents are not sending their children to the school, there should be laws which punish their guardian because his child being not sent to school. So उसी प्रकार से अब आप अप्रोच लोगे तो more and more children start going to school, and that is where a gradually period of time new generation will come that is educated, and with a period of time this caste divide etc will be removed. So जब तक आप कास्ट के बेसिस पर नीचे देखना बंद नहीं करोगे तब तक रिजर्वेशन की पॉलिसी का अंत नहीं होगा. So that's it for this topic. We end by this with this topic. Thank you for watching this lecture, and in the another lecture we would start with the new concept of equality, that is in article 14. Thank you for watching lecture.